So hi guys, welcome to this video. So today we are going to talk about what constant variables and data types. This is our third video lecture that we are going to talk about this topic. What is data type? What is variables? What is constants? Right. So stay tuned with me and let's learn together. That is the initiative, right? So what is data type? Every variable in Java does the data type in the specialization of size and type of value it's going to store. So it is a flow chart. यहाँ पे एक फ्लो चार्ट है. इस फ्लो चार्ट के अंदर हम कुछ चीज़ें को डिवाइड करके आराम से समझते हैं. तो डाटा टाइप पहले दो भागों में डिवाइड होता है, प्रिमिटिव देन नॉन प्रिमिटिव. देन नॉन प्रिमिटिव तीन भागों में होता है, क्लासेस, इंटरफेसेस एंड आरए. बट that primitive data type again it was dividing as two types, numeric and non numeric. नॉन न्यूमेरिक क्या है, दो दो भागों में डिवाइड हो जाता है, कैरेक्टर एंड वॉल्यूम. बट देन द न्यूमेरिक हैज टू टाइप, इंटीजर एंड फ्लोटिंग पॉइंट. आफ्टर दिस इट वाज डिवाइडेड आउट समटाइम्स. एट इंटीजर के ऊपर आता है वाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग एंड द फ्लोटिंग पॉइंट फ्लोट एंड डब्ल्यू. राइट. इसके नीचे इस चीज़ों को एक एक करके एक्सप्लेन किया हुआ है. राइट. इंटीजर डाटा टाइप, it can be store only whole numbers of such as 98, 13, like these numbers. The size of value that can be stored depend upon integers data type and flows in Java supports of four type of integers: byte, short, long, int. As you can see here, byte, short, int, long. Right, integer data type. Then all of the value of Java is assigned means they can be positive or negative because it does not have the concept of unsigned data type and type of size and range here written in byte. One byte, that is the range in positive way, in negative, sorry, in negative way, positive way. Short, 2 byte, here is the range. Int, 4 byte, here is the range. Long, 8 byte, here is the range. Then the note, we can make the integers as long by the pending the letter L or L. The end of the number is going to like this. The floating point type. The floating point is the data type can hold the number of containing fractional parts such as the 27, 13. Java supports the two types of floating points of numbers such as float and double. Right. 27 point. फ्लोटिंग पॉइंट में कुछ चीज़ें ऐसी होती है, यहाँ पे पॉइंट सोर्स होता है. आप कैसे अलग अलग करोगे ना, इंटीजर में क्या होता है, पॉइंट नहीं होता. some point is that mean 0.01 0.02 ऐसा नहीं होता, 1 2 3 4 5 up to 100,000 like get in that way. Right. 1 2 2 3 4 up to 100. Right. बट यहाँ पे क्या होता है 0.12 1.23 3.14. तो ये यहाँ पे डिफाइन होता है फ्लोटिंग पॉइंट्स. राइट. द फ्लोटिंग वैल्यूज आर सिंगल at precision number of while double type of presentation, sorry, represent doubled precision numbers are not. Floating point number can be treated as double precision quantities by the default. To force them to be single precision, we should tend to f or f number. So next, floating 4 byte, double 8 byte. यहाँ पे रेंज नहीं लिखा है. राइट. देन नोट, आप लोग ये चीज़ें गूगल पे या फिर चैट जीपीटी में आके देख लेना है, क्यों नहीं लिखा है, नहीं शायद याद नहीं है, देखना छोड़ दिया है. राइट. तो ये चीज़ें आप चैट जीपीटी में मार देना, या फिर मैं बता ही देता हूँ. 4 बाइट ऑफ फ्लोट, 4 बाइट ऑफ फ्लोट कितना होता है वो, एक मिनट. फ्लोट
Its range is approximately minus 3.4 into 10 to the power 38 or positive way 3.4 to 10 to the power 38, right? तो पॉजिटिव का है, मैंने फ्लोट का बता दिया, आप डबल का खुद सर्च करो, राइट? हर एक चीज़ तो नहीं बताया जा सकता ना, कुछ चीज़ें खुद से भी करनी होती है। बस सर्च करना है बेटा, और कुछ नहीं करना है, ज़्यादा कुछ मुश्किल काम भी नहीं है। मैथमेटिकल फंक्शन है सच एज साइन कॉस score as the return double type of value in Java. Floating point is the data type and support as the special value is known as a number. Then used as the represent as the result for the divided by zero, where is the actual number can't be. In the character type, in the order of store is the character constant as memory. Java provides the character data type is called as char. Size of char is 2 byte. Then it hold any single character boolean type. It is used when we want to test a particular condition during the execution. There is only two values, that is the Boolean type of take true or false. The next one. Boolean type is denoted by keywords. Boolean is used only 1 byte of storage. Then giving the value of variables. Before we assign the values to variables, it must be declared a syntax data type as int a b float x. ऑब्वियसली अभी पिछले वाले प्रोग्राम में क्या किया, यही तो किया। वेरिएबल्स को डिफाइन किए बगैर कुछ थोड़ी हो जा सकता है। देखो, देख लो। अरे फिर से ओपन करना पड़ेगा क्या? कोई बात नहीं, कर लेते, 1 मिनट रुक जाओ। एक मिनट। तो यही है, देखो यहाँ पे किया कि नहीं, इंट। अगर फ्लोट लिखता तो यहाँ पे, अगर यहाँ पे फ्लोट होता ना, यहाँ पे देख, एक रन करके दिखाता, पॉइंट राइट फ्लोट। अब इसको रन करते हैं। यहाँ पे एक्सटेंशन पे कुछ एरर आ रहा है, कोई बात नहीं। इस चीज़ को बाद में समझ में मेरा आइडेंट यहाँ पे लिख लेते हैं। इस चीज़ को थोड़ी देर बाद टाइप करेंगे, राइट? शायद अभी कुछ एरर आ रहा है, बाद में देखेंगे। कोई बात नहीं, बाद में देखेंगे बेटा, उसमें क्या है। So as you can assign the value of variable two ways, such as by using the assign operator, by using the read of statement. The single method, as we given the value, the variable through the assignment statement syntax here, variable name is value is here, then int that is here, double that is here, x is that is here, as I say. Then the purpose of giving the initial value, the variable is known as initialization. Then the ones here is number of initialize as the automatically set to 0. Then scope of variable. Java is a variable is actually classified in three types as instance variable, classes variable, local variable.
The scope of variable is defined as the region of the program whereas the variable is acceptable. Then the instance of classes of variable as declared as the inside the classes of instance of variable are created within the objects are instanted as a for they are associated with the objects. Variable declared as used as the inside method are called as local variable. When we have to instead as a program box, then we may have such blocks with their own set logical variable. We can't declare as the variable as the outer block as the blocks. These are the blocks, right? यहाँ पे स्टार्ट हुआ, यहाँ पे इंट लिखा, फिर स्टार्ट हुआ, यहाँ पे कुछ लिखा, फिर यहाँ पे ये चीज़ें क्लोज हो गई, फिर स्टार्ट हुआ, फिर यहाँ पे कुछ लिखा, फिर यहाँ पे क्लोज हुआ, देन फाइनली क्लोज होगा। यहाँ पे ब्लॉक्स है, राइट? ये वाला पहला ब्लॉक है, ये वाला ऊपर से नीचे तक पहला, ये दूसरा वाला, ये तीसरा वाला, ये दूसरा तीसरा पहले के अंदर है, राइट? In the Java, we can't declare as the graph as the block 1, block 2, block 3, right? Declare in C and C++. Type of conversation. There is two type of conversation is here is automatic and the type of casting. The automatic conversation is defined as the type of possible assigned as a value as one type of variable is different type of without and the cast. Automatic type of conversation is possible once only if the distinction type of enough of progressions are stored as the source of values at byte as b equals to a, then int a equals to that. Then the process is assigned in the smaller type of larger known as winding of the promotions as process as assigned as the larger type to be smaller as known as narrowing and may be the result as less of information. Then the type of casting. The process at the conversation is type of another called as casting. To do so, we have to follow the syntax type of variable, then type, then the variable, then the as I last this is the last one. In the integer, for integer type of we cast to any other type of except volume. Similarly, float and the double as we can cast in the other except boolean in the type from to. There's a byte. These are some types, right? Cast with the number of loss info that you can see. That is the example you can use. Then symbolic constant. Symbolic constant is a name that is suitable for the consequence character as a number constant. It is the program is compiled is occurrence of the symbolic constant as replied to the constant characters corresponding character sequence. Then the syntax. Final type of symbolic name that the value. The final student is 50, then that is the value, right? The symbolic constant is take over the same forms of variables name, but the written is the capitals. It is a just conversation is not a rules, not a rule. After the declaration symbolic constant there should not be assigned with each other the value within the program. Symbolic constants we cannot be declared inside the method. They should be used as the data the beginning of the classes. So that is here bros. आज का हमारा सेशन यही पे एंड होता है। तो आज हमने क्या पढ़ा? वेरिएबल्स, व्हाट इज़ वेरिएबल, डाटा टाइप्स क्या होते हैं जावा में, यही चीज़ों को हमने एक्सप्लेन किया पॉइंट बाय पॉइंट। तो अपने नेक्स्ट सेशन में हम लोग क्या किस चीज़ के बारे में डिस्कस करने वाले हैं? ऑपरेटर्स एंड एक्सप्रेशंस। सो आज के लिए बस इतना ही। सो एक चीज़ बोलूँगा कि जो जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ वो चीज़ों के ऊपर थोड़ा सा ज़्यादा प्रैक्टिस कर मैं प्रैक्टिस को बनाया